दा कोलकाता में जूनियर डॉक्टर की अजमत रेजी व कत्ल की मजम्मत, कसूरवारों को सज़ा देने का मुतालबा। जगत्याल में आज बाद नमाज मगरिब तहसील चौराहा पर जमात इस्लामी JUSA की जानिब से कैंडल मार्च। इसके ऊपर हो गए बात करो यार ऐसे अभी जैसा लेता 3 मिनट की याद कलकत्ता में जो वाक़या पेश आया ट्रेनी डॉक्टर के साथ, जिस तरह उनको ख़त्म किया गया, उनका रेप किया गया और उन पर तशद्दुद किया गया, ये एक इंतहाई इंसानियत से शर्मनाक वाक़या है। जमात इस्लामी हिंद जगतियाल यूनिट की जानिब से इस मौके पर ये कैंडल जो है मार्च किया गया है और इस मौके पर हम बहुत ही स्ट्रॉन्गली कंडेम करते हैं इस वाक़े को। जमात इस्लामी की जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन से SIO और GIO की जानिब से जो है ये कैंडल जो है प्रोटेस्ट किया गया है। इस मौके पर मैं तेलुगु में बोलने के लिए इस समरीन को जो है दावत देता हूँ कि वो इस मौके पर कुछ तेलुगु में जो है आप बयान फरमाएं। అందరికీ నమస్కారం అందరికీ నమస్కారం కోల్కతాలో జరిగిన ఈ సంఘటనపై దేశంలోని ప్రతి ఒక్కరూ స్పందించాలి. ఎందుకంటే ఆడవారు నార్మల్ కాదండి, ఆడవారు కన్న తల్లితో సమానం కాబట్టి అందరూ ప్రతిస్పందించాలి. ఆడవారు దేనికోసం అసలు మన దేవుడు ఇచ్చిన ఒక వరం లాంటిది కాబట్టి ఆడవారిని రక్షించాలి. డ్యూటీలో ఉన్న ఒక డాక్టర్ పైన ఈ విధంగా ప్రమాదం జరిగితే మరి ఇంకా ఎవరికి భద్రత ఉంది? ఏ వృత్తిలో ఉన్న వారికి భద్రత కల్పిస్తారు? నేను ప్రభుత్వాన్ని కోరేది ఇది ఒక విషయమే, మా అందరికీ భద్రత కల్పించాలి. దేశంలోని ప్రతి ఒక్క అమ్మాయికి కులం మతం కాదండి, ప్రతి ఒక్క అమ్మాయికి మాకు భద్రత కల్పించాలి. ఇదే మా ఒక కోరిక. దీంట్లో అందరూ JIO వారు అందరూ పాల్గొన్నారు కాబట్టి మా నివేదనను వినాలి, మాకు న్యాయం కల్పించాలి. ఆ నిందితుడిపై త్వరగా తనకి నేరం శిక్షణ విధించాలని కోరుకుంటున్నాను. जमात इस्लामी जगतियाल यूनिट strongly condemn in a possible strongest words the heinous crime we did against a trainee doctor in Calcutta. It is really very shameful, very heinous crime. She was murdered and previously before that she was brutally mutilated and raped number of times. This is really a very serious issue, and at this time I ask the society which we are living, who did this? Who are the culprits? These are the people who are not illiterate. These are the people who are not from the dark ages, not from the stone ages. They are from the 21st century and they are from the modern society. They are literate people, and you know that the deceased mother has raised the fingers, has raised the needle of suspicion towards the trainee colleagues. तो इस मौके पर मैं कहना चाहता हूँ कि एक इंतहाई शर्मनाक, इंतहाई दर्दनाक वाक़या है. किस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, किस माशरे में हम रह रहे हैं, and we are still seeing that the people are silent. They are not protesting, they are not coming forward, they are not saying any words against this heinous crime.
व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी वी आर लिविंग। तो इस मौके पर मैं यही कहना चाहता हूँ, मैसेज देना चाहता हूँ कि जस्टिस दीजिए। एंड यू नो दैट द मदर ऑफ द डिसीज डॉक्टर हैज़ रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एनी एक्सग्रेशिया। वो कह रही है कि हम कोई एक्सग्रेशिया नहीं लेंगे। बच्ची की जो जान गई है उसका कोई नेमुल बदल, उसका कोई पैसा जो है उसको नहीं दिया जा सकता है। हम ये चाहते हैं कि जो लोग भी इसके पीछे हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और ऐसी सज़ा दी जाए कि दूसरे लोगों के लिए वो एक इबरतनाक जो है वाक़या बन जाए, ताकि लोगों को जो है दोबारा इस तरह की ज़रूरत ना हो। इस मौके पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि फ्रॉम लास्ट डिकेड द क्राइम रेट इंक्रीज अगेंस्ट द वोमेन, द रेप केसेस आर इंक्रीज, एंड you know that even infant 2-3 months infant are not escaped from this heinous crime, from this rape। किस सोसाइटी में रह रहे हैं, क्या माशरा हमारा हो रहा है कि औरतों के खिलाफ मुख्तलिफ़ किस्म के जो है रेप और ज़िना बिल जब्र के वाक़यात हो रहे हैं और सोसाइटी खामोश है, हुकूमत खामोश है, इस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो ये मुजरिमों के लिए और ज़्यादा जो है इसका बास होगा कि वो कहेंगे कि भाई कोई पकड़ने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, पॉलिटिशियंस हमारे पीछे हम छूट जाएंगे। नतीजा ये हो रहा है कि सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। और आप याद रखिए, अगर सोसाइटी इस तरह खामोश रही, एक्शन नहीं ली, हमारे ख़ास तौर पर जो लेडीज़ हैं, हमारे जो मदर्स हैं, हमारे जो सिस्टर्स हैं, वो आगे नहीं आएंगे तो कल ये वाक़या उनके साथ भी होगा, कल ये मामला उनके साथ भी पेश आएगा और सब खामोश रहेंगे। उस वक्त आप चाहेंगे कि हमारे ताल्लुक़ से कोई बोले, somebody should come forward and tell and support us, but nobody will support you, because if you will not come now, you will face the same consequences। ये मैं आज के तौर पर मैसेज देना चाहता हूँ और आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मौके पर जो कैंडल प्रोटेस्ट हमने किया है इसमें आप शरीक रहे। थैंक यू। एग्जैक्ट मेंबर हैं आप, इस मौके Today I stand with countless others against the horrific crime of rape. As a young woman deeply committed towards the values of justice and dignity by our faith, I cannot remain silent in the face of such injustice. In Islam, we are taught to the values of justice and dignity for every individual. Our Prophet, peace be upon him, said that a woman may travel from Yemen to the Mecca alone and be safer. These profound statements highlight the importance of a woman, highlight the importance that every woman should be protected and feel safer in the every part of the they should enjoy the freedom in every part of the world. But now we are seeing, what we are witnessing is a sad reality that women are unsafe in the every part of the world. Today we are here to protest for the real change. We demand for the stronger laws that protects us, and we demand for the education that prevents such things, and we demand for the justice that protects the saviors. And we call our protest calls towards the society to act to respond to such things that is happening in that is happening around us. So let's work together to construct a society that works for every woman's safety and security. Thank you.